Hello, good afternoon everyone. Welcome to CGBMentors. So first of all, please tell me whether my voice is clear and I hope the screen is also clearly visible to all of you. आवाज आ रही है सबको? Is my voice clear? Mic testing, all good, all good. ठीक है, okay. So let's start today's session. In this session, we'll be discussing about the recent index released by the Reserve Bank of India. And this is a very important index. We usually do not see it regularly. Okay, so let's discuss what this index is all about. What are the most important parameters on the basis of which the data has been collected with respect to this index? So, थोड़ा static समझने के बाद we will understand that what has been the latest trends in this index. Okay, because the questions will be not only from the latest trends, they will also be asked with respect to static concept of the index also. Okay, so all the things comprehensively we will be covering in this whole session and in a very brief manner. Okay. So right now what we are discussing in this session is Supervisory Data Quality Index. So technically, we are concerned about the fact that whatever supervised entities that Reserve Bank of India usually supervise them, which includes all the regulated entities like banks, foreign banks, scheduled commercial banks, which includes foreign banks, private sector banks, public sector banks, and even small finance banks also. How are they doing, especially with respect to returns that they are filing with respect to different returns that Reserve Bank of India usually ask. जैसे आप लोग इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स भरना केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको उसका रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, जिसमें आप बताते हैं कि मैंने इतना इतना इनकम दिया, ठीक है, उसके ऊपर मेरा इतना इनकम टैक्स बना और मैंने इतना इनकम टैक्स पे किया. फिर बाद में अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया तो रिटर्न फाइल करके यू कैन मेंशन कि इतना मेरे पास अमाउंट वापस आना चाहिए, ठीक है, या फिर इतना अमाउंट कम पड़ गया तो मैं इतना अमाउंट अभी आपको और पे कर रहा हूँ. तो ये रिटर्न इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम यू डूइंग द एक्टिविटी ऑफ पेइंग टैक्स. और आपको तो केवल एक ही रिटर्न भरना पड़ता है. जितने भी सुपरवाइज्ड एंटिटीज हैं जैसे बैंक्स हो गई, अब बैंक्स को तो बहुत सारे रिटर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देने पड़ते हैं कि एनपीए आप लोगों का क्या चल रहा है ना, और फिर आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू योर कैपिटल एडिक्वेसी. आपका कैपिटल एडिक्वेसी है कि नहीं है, मतलब आपके पास इनफ कैपिटल है अपने आप को सस्टेन करने के लिए. ये सारी चीज़ें उनको पीरियोडिक इंटरवल पे हर क्वार्टर में या फिर हर 15 दिन में ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती है. अब आरबीआई के पास डेटा इतना सारा आ रहा है, ठीक है, आरबीआई को कैसे पता लगे कि उस डेटा की क्वालिटी क्या है. और आरबीआई केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैंक से कंसर्न नहीं है, आरबीआई केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी से कंसर्न नहीं है. आरबीआई तो पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को एक साथ लेके चलना चाहती है. तो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू कम अप विद वन सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स, जिससे वो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के डिफरेंट कैटेगरीज की डेटा क्वालिटी पर नजर रख सके, जिससे उनको पता लगे कि डेटा क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर दिक्कत आ रही है तो किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आ रही है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेटा क्वालिटी आप कैसे असेस करेंगे, दिस विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. ऑल दोज पैरामीटर्स वी विल डिस्कस, बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट हाउ Reserve Bank of India is concerned about the data quality that it is receiving because of all the supervisory returns that these regulated entities have to give to the Reserve Bank of India. चलिए, so if you see this supervisory data quality index, Reserve Bank of India has created this data quality index in terms of 4 broad parameters, and these 4 broad parameters include accuracy, timeliness, completeness, consistency. Okay, so these are those 4 broad parameters on the basis of which we judge
that how is the data quality that is given by the regulated entities to the regulator, which is Reserve Bank of India. Okay? And what is the objective behind creating this whole data quality index? That to identify whether the regulated entities are adhering to the principles enunciated in the master direction on filing of supervisory returns. And these basically include these four broad parameters only. कि आप टाइम से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं अपना रिटर्न, आप कंसिस्टेंटली अपना रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज फोर स्टैटिक पोर्शन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. कि सबसे पहली चीज आती है एक्यूरेसी की बात. एक्यूरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपका एक्चुअल जो डेटा है वही आप रिटर्न में फाइल करें. जस्ट लाइक समटाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि आपने आपकी इनकम है मान लीजिए 13 लाख रुपए, आप कुछ ना कुछ करके उसमें आप इनकम टैक्स वालों को केवल 12 लाख दिखा रहे हो. So right now the problem is of accuracy. You are not accurate as per whatever your income is. I'm not talking about exemptions. केवल आप income ही कम दिखा रहे हो just because you want to save tax. That means your data is not accurate. So accuracy is one such important parameter on the basis of which data quality depends. So that's the first component. Okay. Next component is completeness. अब completeness क्या है? Basically think about a case scenario of a bank. अब बैंक से उसका लोन का डेटा मांगा हुआ है, ठीक है. जैसे think about this return that needs to be filed by various banks, and this return is about loans that these banks have provided in different categories. तो आपको पता है लोन्स पर्सनल लोन भी होता है ना, फिर बिजनेस लोन्स भी होते हैं. तो बिजनेस लोन में मान लीजिए कुछ यू हैव प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, देन टर्म लोन. तो इसका डेटा बैंक ने भर दिया, इसका भी भर दिया. फिर पर्सनल में नॉर्मल पर्सनल लोन, फिर लेट्स से क्रेडिट कार्ड, फिर लेट्स से आप एजुकेशन लोन मान लीजिए, इन्होंने इसको भी भर दिया, इसको भी भर दिया, बट एजुकेशन लोन खाली छोड़ दिया. दे हैव केप्ट दिस एम्प्टी. ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने एजुकेशन लोन नहीं दिया होगा, ठीक है. तो if such kind of empty spaces are found in your returns, that showcases to the Reserve Bank of India that you are not complete with respect to telling us that what your data is. So this is also one of the most important factor, this completeness, कि आपका जितना भी डेटा आपसे मांगा गया अगर आप करते हो तो उसको पूरा कंप्लीट करके दीजिए, खाली मत छोड़िए. जस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी डजंट मीन यू हैव टू लीव इट. जैसे बहुत बार फॉर्म्स आपने भरे हैं तो फॉर्म्स में कुछ चीजें आस्टरिस्क से मार्क करके बोल देते हैं कि ये तो आपको कंपल्सरीली भरनी है, फिर बाकी चीजें नहीं मार्क होती तो आप छोड़ देते हो क्योंकि कंपल्सरी नहीं है. बट इट शोकेसेस दैट यू आर नॉट कंप्लीट विद योर डेटा. So completeness is also one of the most important factor with respect to data quality. Second thing is obviously timeliness. अब timeliness का क्या मतलब है? That आपसे हम लोगों ने expect किया था कि आप हर क्वार्टर अपना लोन का डेटा भेजेंगे, बट आपने नहीं भेजा, आप 3-4 महीने लगा के डेटा भेज रहे हो. So you are taking too much time and you are going beyond the mandated timeline, and that showcases that you are delaying the delivery of data. So timeliness refers to that you need to submit the returns within the stipulated time as per mentioned in the master direction of supervisory returns. So timeliness is again an important factor, especially in the context of supervisory data quality index. So do not forget this. अब timeliness के basis पे they have categorized instances of delay into 4 things. First is without default, infrequent, more frequent, and repetitive. That means first is without default, chalo, that you are consistently without default giving your data on time. Then infrequent, that let's say only one time in whole year, so that is infrequent, fine. More frequent, more number of times, let's say 4 times in whole 1 year. And repetitive, that means every month you are delaying. So these are the 4 categories with respect to delays in data quality index.
And last thing is consistency. We also want to check whether the data that you are providing is consistent or not. So think about a case scenario where if you check the data of NPA of a small finance bank, so those are 23, 24, 25, 23 में उनका 100 करोड़ का एनपीए था, इधर लेट्स से कह लो आप 101 करोड़ का एनपीए, और यहाँ बोले आपको अचानक से कि 2 करोड़ का एनपीए, तो आप बोलोगे ना कि क्या चल रहा है, अचानक से ये इतना डिक्लाइन क्यों हुआ? This data is not consistent with respect to your original data until unless there is a substantial reason for this. I would call this data as inconsistent. अगर कोई रीजन नहीं हुआ तो naturally there will be some inaccuracy in your overall system. That's why your system was not able to, fetch the data of NPA like in the case of last year. So that's also one of the major reasons that we check while calculating your Supervisory Data Quality Index score. So I hope all these 4 parameters are clear to all of you. First of all, please tell me this. ये चारों पैरामीटर आप लोगों को क्लियर है? And if it is clear, let's move forward. So this, as you can see, in this way, your whole Supervisory Data Quality Index is calculated. तो एंटिटी डेटा मतलब बैंक के लेवल पर, फिर उसको वो लोग रिटर्न में फाइल करते हैं, फिर ऑल दीज थिंग्स आर चेक्ड, द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ डिलेज, all these things determine your timeliness, submission of all returns, mandatory fields have been filled or not. This showcase your completeness within current period with past period data within return. Okay, this showcases your accuracy, average of accuracy scores of past period, showcasing your consistency, and all this determines your SDQI, which is Supervisory Data Quality Index. So on the basis of, obviously on the basis of your score that you receive in the SDQI index, you will be categorized into 4 categories. So if your score is between 90 to 100, then you will be categorized as good. If your score is between 80 to 90, you will be categorized as acceptable. If your score is between 70 to 80, you will be categorized as needs improvement. And if your score is less than 70, you will be categorized as major concern. Okay, so these are the 4 categories on the basis of scores that a particular regulated entity will be categorized upon. First is good, acceptable, needs improvement, major concern. तो आप ये चारों चीजें याद करके रखना, स्कोर के हिसाब से याद करके रखना, मैच द कॉलम में डेफिनेटली सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. So until now we were discussing and focusing mainly on static portion of the index. Now let's see कि इस साल के इंडेक्स में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, what has been the data, and from that data what kind of trend can we fetch. So if you can see the number of entities and the category in which they belong, which is good, acceptable, needs improvement, major concerns. So we'll just limit ourselves with respect to March 25, in which you can see most of them are in good category or acceptable category. इक्का है, एक ही है जो needs improvement वाली category में है, but there is no entity that is in major concern, so which is a good sign. Okay, but still if you understand, अगर मैं आपसे पूछूं that with respect to which category has the highest number of regulated entity, so what will you say? You can easily detect this 44, which is acceptable category.
ठीक है, I hope this is clear. And if they ask you which category has the least number of entities, you would say major concern, because there is no entity over there, especially with respect to March 25, the latest data. And this is the table that I have provided with you guys. ये टेबल जिसमें हम लोग केवल मार्च 25 के डेटा से कंसर्न रहेंगे, इसमें मार्च 24 का भी डेटा था, नन ऑफ आवर कंसर्न, वील जस्ट फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो अगर आप पूरे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का केस देखो तो देयर ओवरऑल SDQI इंडेक्स स्कोर इज 89.3, अ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट डेटा मेट्रिक दैट यू नीड टू रिमेंबर. So on the basis of this, in which category you will put it? In acceptable category, almost at the verge of crossing it to good category. Okay, and then they have subcategorized scheduled commercial banks into public sector banks, private sector banks, foreign banks, as well as small finance bank. So if you see the overall SDQI score, अगर आप overall SDQI score देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोर आपको किस कैटेगरी में मिलेगा? In small finance bank. So small finance bank is such category which possess the highest score in SDQI, which is 90.6. So very important. Small finance bank also has the highest score in two subcategories. अब ये देखो मैंने कैटेगरी वाइज भी टॉपर्स को इसमें हाईलाइट कर दिया है जिससे आपको पता लग जाए in each individual category what kind of bank group has the highest score. So in timeliness and consistency, small finance bank is at the top. In case of completeness, 99.4, public sector banks is at the top. In case of accuracy, private sector banks are at the top. Okay, so in this manner you will be able to understand कि कौन सा बैंक ग्रुप किस मामले में they have strength, किस मामले में they are having weakness. So if you can see the trends, so overall score 89.3 of all scheduled commercial banks, category of banks based on SDQI score, सबसे आगे small finance bank, फिर private sector banks, फिर foreign banks and फिर last में public sector banks. So public sector banks has the lowest DQI score, especially amongst these bank groups. And if you see the improvement of score in scheduled commercial banks, overall improvement has been improved from 88.6 to 89.3. A very important thing. So trend has been in increasing sense, especially with respect to the overall score of scheduled commercial banks. And these are individual trends with respect to parameters. So timeliness के केस में scheduled commercial banks का आपको ये दिखा है pattern. In case of completeness, almost stable. In case of accuracy, increasing. In case of consistency, almost stable. I hope this is clear. And if you see the data tells you whatever this data that Reserve Bank of India has accumulated in SDQI index, it is the data that covers 87 scheduled commercial banks and their key returns, which include return on asset liability, return on asset quality, all these different returns. So at 87 SCBs को इन्होंने पकड़ा, उनके returns का data उठा के they have calculated SDQI index. ठीक है, and उस basis पे हम लोगों ने इतना सारा score अपना check कर ही लिया. So I hope all of this thing is clear to all of you guys. इसमें आप इतना डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो इस इंडेक्स से जितना भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व. ओके, so if you have any other question, feel free to ask, otherwise we'll wind up the session.
नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, डोंट वरी। डिस्क्रिप्टिव के चांसेस कम है इसमें से, ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। चलो, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी 4 बजे एनुअल रिपोर्ट का सेशन है, उसमें मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। मतलब climate change meaning you can open it up. Climate change, you can refer to global warming, change in weather patterns that you are witnessing. Everything is interconnected. Okay, the global warming you can think about emissions that are causing them. You can talk about other impacts also. When we talk about climate change, so the definition clearly says that irreversible change in climatic patterns due to anthropogenic activities is what we refer to as climate change. Okay, so you can elaborate from there.